So we're starting with paper 5 variant 1, variant 2 first. Okay. Okay. So this is October, November 2021. You can look at the instructions, pretty standard. Working आपने show करनी है, इसमें बहुत ये इसका issue होता है क्योंकि बहुत आंसर short होते हैं अक्सर लोग आंसर लिख के आ जाते हैं सर, working नहीं proper show करते and they lose marks there for no reason. Make sure you write every step that you're thinking of. हर step आपने show करना है क्योंकि ताकि आपको method के marks सारे complete मिले. और जो आपकी सारी working होगी, you have to make sure you're doing all working to 4 significant figures, at least 4 significant figures, ताकि आपके final answers accurate आए. Z की value जब आप normal distribution में लेंगे, that should be 3 decimal places, और जो normal distribution में probability की values होंगी, वो 4 decimal places लेनी है. These are the points that you need to remember before we start this. Okay. Now, again, as I said earlier, we're not going to do this complete paper, only some selected questions, which are relatively more difficult. Okay. Question number 1 is straightforward. Question 1 ka third part mein mark kiya hua. Let's just do that. It's a pretty standard part as well, but a lot of people, for some reason, they end up getting this wrong. So let's just do this part. First or second parts asan hai. Each of the 180 students at a college plays exactly one of the piano, the guitar, and the drums. The number of male and female students who play the piano, guitar, and the drums are given in the following table. Up the table given hai. A student at the college is chosen at random. So out of all of these people, which are 180 in total, one person is chosen at random. You can do the first 2 parts. Third part में वो कहता है, determine whether the events the student plays the guitar and the student is female, they are independent. अच्छा, independent events की condition क्या होती है? Let me write that down here. If 2 events A and B are independent, probability of A intersection B should be equal to probability of A into probability of B. ठीक है? आपने ये check करना है इसके ऊपर इस context के अंदर. Event A यहाँ पे क्या हो गया? Student plays the guitar. We can represent that with letter G. So we can say probability of G. And the other event is being female. That's intersection female. एक हमें ये calculate करना है, दूसरा हमें calculate करना है probability of G multiplied by probability of F. ये दोनों चीजें आपने अलग-अलग calculate करनी है, and you have to figure out whether they come out to be equal or not. अगर वो equal आ जाते हैं तो independent होंगे events, अगर equal नहीं आते independent नहीं होंगे. ठीक है? What about probability of G intersection F? जब एक table में information दी होती है, it's always easier to look at the table and do these probability calculations directly from the table. For example, यहाँ पे guitar और female का intersection क्या है? That's this 38. 38 over 180, that's this probability. 38 over 180. Okay, out of the total, that total was 180. Achha. What else? Probability of playing guitar, वो कैसे आएगी? टेबल वाले जब भी क्वेश्चन होते हैं हमें क्या कर लिया करते हैं यहाँ पे ना टोटल्स ऐड कर लिया करते हैं. मेल्स का टोटल, फीमेल्स का टोटल, पियानो का टोटल, गिटार का टोटल, ड्रम्स का टोटल. यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? गिटार का टोटल. ये देख लें क्या है. 44 plus 38, what's that? That's 82. Or females का total, that is 20 plus 38 plus 42. Is that 100? Yes, that should be 100. So probability of guitar, probability of a person playing guitar, what's that? 82 over 180 multiplied by the person being female, the person was chosen randomly. Female की probability क्या है? 100 over 180. इनको कैलकुलेटर से इवैल्यूएट कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, देखिए क्या आता है. 82 into 100 divided by 180 and 180. The fraction on the right side is giving me 41 over 162. Left side को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, that gives me 30 over 180. That is 19 over 90. Now, since they are not equal,
we will say they are not independent. Yes, Fazan, you will have to evaluate these probabilities. You can't just write them. You can't just write them. You have to evaluate the probabilities. Otherwise, ये तो जनरल इक्वेशन है ना, आपको उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसने स्पेसिफिक लिखा होता है मार्जिन स्कीम के अंदर कि आपको शो करना है हाउ यू आर अप्लाइंग दिस रिलेशनशिप ऑन द गिवन सिचुएशन. तो आपने वो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके दिखानी है और फिर बताना है कि अच्छा दे आर नॉट इक्वल, सो दैट्स व्हाई दिस इज these events are not independent. All right. Okay, let's move on. That was the first question that we wanted to do. Let's move on. Second question, it's a permutation and combination question. ये हमेशा लोग confuse करते हैं. Let's do this one. A group of 6 people is to be chosen from 4 men and 11 women. 6 people choose करने. There are 4 men and 11 women. Now, in how many different ways can a group of 6 be chosen if it must contain exactly one man? Exactly one man. अब इसका क्या मतलब है? Total क्या आपके पास आ रहे हैं? You've got 4 men and you've got 11 women. अब 4 men में से आपको कितने choose करने हैं? You have to choose one. There's only one case, right? There are no cases. Exactly one man चाहिए ना? So there's only one man. How many women do we need then? 6 people total होने चाहिए. So we need 5 women. What does that give you? That gives you 4C1. In 4 में से एक बंदा choose करना है. And then out of 11 women, we need 5 women. So 4C1 into 11C5, that's going to give you the result. इसको आप ऐसे छोड़ के नहीं आएंगे. You'll write down the final result after this, after evaluating. और आप देख लें बस क्या आता है. 4 into 11C5. And that turns out to be 1848. That's your final result. ठीक है? Hashim, that's so if you're in A2, you should actually know this. This ulta U, as you are referring to this is the intersection sign. Remember O-level sets, intersection की बात हो रही है. This is A intersection B, right? U means union, this sign means intersection. Right? When both of them are true at the same time. इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं. We can say this is A and B. Right? Intersection होता है उसको and कहते हैं. Union होता है उसको हम और कहते हैं. ठीक है? So this is intersection. Yes, intersection का sign होता है. All right. Let's look at the second part here. 2 of the 11 women are sisters, Jane and Kate. In how many different ways can a group of 6 be chosen if those 2 sisters cannot both be in the group? Okay. Now, the first thing that you have to do here is you have to understand the situation correctly. Jane and Kate, they cannot both be in the group. What does that mean? Does it mean दोनों में से कोई भी group में नहीं हो सकता? दोनों में से कोई भी group में नहीं हो सकता? Is that what it means? Yeah, so at least, so one of the 2 can be, but they cannot both be in the group. दोनों एक टाइम पे साथ नहीं हो सकते हैं, individually हो सकते हैं. So if you think about it, there are 4 possible cases. There are 4 possible cases. JK, they are both there. J is there, K is not here. J is not there, K is there. And both J and K are not there, right? This case is not possible. उसने कहा दोनों नहीं हो सकते हैं. But this is fine, this is fine, this is fine. उनमें कोई मसला नहीं है. एक टाइम पे एक हो सकता है, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते. अब इसका क्या तरीका हो सकता है?
या तो आप ये तीनों केसेस निकाल लो अलग अलग, उनको ऐड कर दो, या फिर आप जो आपने टोटल, आपके पास टोटल होगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, टोटल में से आप ये वाला केस माइनस कर दो जहां पे दोनों आ रहे हैं, ठीक है। Now what's the total number of ways that you've got of choosing those 6 people? Total number of ways कितने होंगे? What about that? Walaikum assalam, Rafi. What about the total number of ways that we have here? देखिए टोटल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. There are 15 people in total. Out of those 15, you've got to choose 6. कोई भी 6 आप choose कर सकते हैं. So that's just 15C6. ठीक है, that's the total 15C6. आप evaluate कर लें, अब देख लें पास क्या आता है. That's the total number. That's 5005. Okay, ये तो total हो गया. Now we need the cases in which J and K, they are both selected. ताकि हम टोटल में से वो माइनस कर दें. They are both selected. ये वाला केस हमने फाइंड करना है. Now if they are both selected, what does that mean? If they are both selected, it means we had 15 people in total earlier and we had to choose 6 from them. 15 में से 6 choose करने थे. Now if they are both selected already, how many people are we left with? We're left with 13 people. And out of those 13 people, how many do we have to choose? We have to choose 4. What does that give us? 13C4. That gives us 715. Yes, that's good. Now you cannot just write 5005 there or 715 there directly. ये भी आपने शो करना है और ये भी शो करना है. कॉम्बिनेशन वाली नोटेशन लिखेंगे पहले, उसके बाद उसका रिजल्ट लिखेंगे. ठीक है. So what's the required number of ways now? Required number of ways in which they are not both selected. That's going to be 5005 minus 715, and that's going to give you the result. ये आप देख सकते हैं क्या आता है. This turns out to be 4290 for me. ठीक है? Make sense? Let's move on. Achha, question number 3 is easy for. Okay, so we've got permutation combinations again now. So earlier we had combinations. That was how many marks? 5 marks. And now we've got permutations again. And that's 6 marks. That's total 11 marks. Okay. Iska second part is a bit tricky. Let's look at both the parts. First part is काफी आसान. And how many different ways can the 9 letters of the word telescope be arranged? Well, it's simple arrangement. आप देख लें repetitions कितनी है? E, E, E. There are 3 E's. L एक दफा आ रहा है, S भी एक दफा आ रहा है, C, O, P. Only E is being repeated. How many total letters do we have? We've got 9 letters in total, so that's 9 factorial. Divided by the repeated letters, that's 3 factorial. So divide कर दें, that's going to be a result. ठीक है? ये इस तरह से नहीं छोड़ सकते. You'll have to write down the final result. If you evaluate this, it gives you 60,480. This is the final result. ठीक है? Okay. Now, let's look at the second part. Now it says, in how many different ways can the 9 letters of the word telescope be arranged so that there are exactly 2 letters between the T and the C? T और C के दरम्यान में exactly आपके पास 2 letters होने चाहिए. Now, how do we think about this? Now, one way to think about this could be, you know that there are supposed to be 9 places in total. उनमें से 4 places आपके पास ऐसे होंगे in which you've got T on one end and C on the other end. ठीक है? And then you've got the remaining places. Remaining आपके पास कितने हैं? You've got अगर आप boxes बना लें सबके, ये आपका एक box हो गया. You cannot separate this.
4 के अलावा बाकी कितने रह गए आपके पास? You've got 5 other letters, so you can have 5 other boxes for them. 1, 2, 3, 4, 5. So this is what it actually looks like. ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो? Since you want exactly 2 letters between T and C, in fact यहाँ पे मैं एक लाइन बना दूं, so T और C के दरम्यान में 2 letters और हो सकते हैं. Now one way to think about this is, आप पहले तो ये outer boxes सबकी arrangements देख रहे हैं, right? जो outer boxes हैं सारे इनके arrangements देख रहे हैं. How many outer boxes do we have? अंदर वाले को मैं different one कर दूं, do it in green. How many outer boxes do we have in total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 तो ये, and then 6th is the bigger box. इनकी arrangements कितनी हो जाएंगी outer boxes की? They're going to be 6 factorial. ठीक है, 6 factorial इसकी होगी. And now we look at what we've got inside there. जो आपके पास green box है, वहां पे क्या हो रहा है? Green box में क्या हो रहा है? We have 4 boxes, लेकिन T and C they have to be at the ends. अब T और C आपस में तो position interchange कर सकते हैं, right? T यहाँ पर आ सकता है, C इधर जा सकता है. That's possible. So there are 2 ways of doing that. And then what about these 2 boxes? In 2 boxes में क्या होएगा आपके पास? आपके पास कोई 2 letters आ रहे होंगे. अब मसला ये है, you don't know which 2 letters can be there. आपके पास बाकी 7 letters है ना total. उन 7 में से कोई भी 2 letters हो सकता है यहाँ पे. We don't know which two letters are going to be there. तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे बाकी जो आपके पास कितने 7 letters रह गए हैं, उन 7 में से आपको क्या करना है? 2 letters यहाँ पे place करने हैं और उनको arrange करना है. So you can say 7P2 for that. This is one way to do this. या आप ये भी कर सकते हैं, 7 में से 2 choose कर लें और फिर उनकी आपस में arrangement देख लें. That's going to be 2 factorial. तो एक ही बात है, दोनों तरह से कर सकते हैं. या आप 7P2 लिख दें directly, या 7C2 into 2 factorial लिख दें. So I can do 7P2 directly. Why am I doing this? क्योंकि बाकी 7 letters में से कोई भी 2 यहाँ पर आ सकते हैं ना, कोई भी 2 आ सकते हैं. So that's going to be 7P2 for that reason. And then finally, since the letters that we have apart from T and C, जो बाकी आपके पास आ रहे हैं, वो क्या है? E, 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 L, S, P. There are 3 E's amongst those letters, right? There are 3 C's amongst those letters. उसको हम क्या करेंगे? हम divide करेंगे किसके साथ? 3 factorial के साथ. Because of that reason, क्योंकि आपके E's repeat हो रहे हैं, E's के repetition को खत्म करना है, उसकी वजह से हमने 3 factorial से divide कर दिया. Does that make sense? Farzan, why aren't we doing a simple 2 factorial? I'm assuming you're asking about this one. यहाँ पे हम 2 factorial क्यों नहीं कर रहे? Because we don't know which of these 6 letters is going to be there. Which of these 6 letters are going to be there? कौन से 2 इसमें से होंगे? There were supposed to be 7 in fact. एक हमने miss कर दिया, 3 and then S, O, B. So which of these 7 letters is going to be there? Why does it matter? Because आपकी arrangements different हो जाएंगे ना. अगर यहाँ पे L, S आ जाए और बाहर आपके पास E, E, E और P, O आ जाए, that's a different arrangement as compared to if you had some other letters here. Letters आपके change हो जाएंगे, आपकी arrangement एक नई arrangement आ जाएगी. So it does matter कि आप कौन से वहाँ पे place कर रहे हो. Okay, this is one way to do it. There's another way to do this as well. You could also think of this another way, and that will be like this. Maybe you'll find that easier. Okay, sorry about that. You could think of it this way.
आप कहते कि 1 2 3 4 you place t here and you place c here. आपने t और c यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। इनके दरम्यान में 2 लेटर्स आने चाहिए एग्जैक्टली। हाउ मेनी आर वी लेफ्ट विद? 1 2 3 4 5. Now, how many positions can this whole block move in? ये कितनी पोजीशन मूव कर सकता है? देखिए अभी ये करंट पोजीशन पे रह सकता है। एक पोजीशन क्या हो सकती है कि ये मूव करके इधर आ जाए और एक ब्लॉक लेफ्ट पे आ जाए, एक एक डैश लेफ्ट पे आ जाए। एक पोजीशन ये हो सकती है कि दरम्यान में आ जाए, 2 लेफ्ट पे आ जाए, 3 राइट पे आ जाए। एक पोजीशन ये हो सकती है कि इधर आ जाए, 3 लेफ्ट पे आ जाए, 2 लेफ्ट राइट पे आ जाए, and so on. You got 6 possible cases for this, 6 possible cases for moving this bigger block. इस bigger block को आप 6 places में मूव कर सकते हो. So that's how we start. इसकी मूवमेंट कितनी होगी? 6 places. And then we think about the dashes. इनमें हमने क्या क्या प्लेस करना है? इनमें हमने बाकी लेटर्स में से कुछ प्लेस करना है. How many letters do we have? We've got 7 remaining letters, so that's just going to be 7 factorial, right? 7 options इसमें, 6 इसमें, 5 4 3 2 1, 7 factorial for that. And then since we have some repetitions there, उसकी वजह से हम क्या करेंगे? इससे डिवाइड कर देंगे 3 factorial से. e's क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, उसे डिवाइड कर दिया. And then this T and C, they can also interchange positions. उसकी वजह से हम क्या करते हैं? We represent that with different color as well. उसकी वजह से हम 2 से और multiply कर देते हैं. Not green. So orange. इसकी वजह से हम क्या करते हैं? इसको 2 से multiply कर देते हैं. T और C क्योंकि positions interchange कर सकते हैं, इसकी वजह से 2 से multiply कर दिया, and that's going to give you the result. So let's evaluate both of them and see what we get. And from the first one, we get 6 factorial. 6 factorial. Where does factorial go? Yeah, 6 factorial into 2 into 7 P2 divided by 6, and that gives me 10,080. This is one way of doing this. And then we have 6 into 7 factorial into 2 divided by 6, and that also gives me the same thing, 10,080. Right? Fazan is really interesting actually. I really like this, although it's confusing, but it requires a lot of thinking, and it's just interesting for that reason. कि आप इसको हर क्वेश्चन में आपको नई चीज मिलती है, so you have to think, and that's interesting, isn't it? बाकी सारे क्या स्टैंडर्ड मेथड लगा के आंसर निकाल लो. You don't even have to make your brain work for that. इसमें दिमाग तो यूज करना पड़ता है कुछ. Let's do the next one, question number 5. इस पेपर से हमने क्या करना है और 6 भी करना है. Okay, so we have a few more questions to do. Let's do this one. Question number 5. In a certain region, the probability that any given day in October is wet is 0.16 independently of other days. So for any one day, the probability of being wet is 0.16. Find the probability that in a 10-day period in October, fewer than 3 days will be wet. ये आप कर सकते हैं, बहुत आसान है. This is binomial, right? Number of successes की बात हो रही है. So it's binomial with n10. Probability of success, wet is being wet is basically a success. The day being wet, that's a success, and the failure is 0.84. Okay. You apply the formula. Probability of x less than 2, less than 3, fewer than 3 की बात हो रही है. So you'll just find the probability of x equals 0, probability of x equals 1, probability of x equals 2. ये तीनों find कर लेंगे. Apply this formula. X equals R equals
NCR P raised to power R Q raised to power N minus R. ठीक है, ये आप अप्लाई कर देंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे, we'll get your result. ठीक है, that's pretty straightforward. Let's look at the next one. ये भी आसान है, but this is going to be needed for the next part, so that's why we want to look at this. Find the probability that the first wet day in October is 8th October. Okay, now what distribution is this? We are looking for the first success. कि first success कब आ रही है? So this is geometric, right? We're looking for the first success. On what day do we get first success? So this is geometric. अच्छा, geometric में आपको क्या चाहिए होता है? Probability of success. Success is the day being wet. That is 0.16. And failure is 0.84. कब से स्टार्ट किया हमने? अक्टूबर के बिल्कुल बिगिनिंग से. सो 8th अक्टूबर को आपकी फर्स्ट सक्सेस है. इसका मतलब क्या है? 7 फेलियर्स पहले. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स 8. फॉर्मूला ज्योमेट्रिक का क्या होता है? x इक्वल्स r इक्वल्स q रेज टू पावर r minus 1 times p. So q raised to power, q here was 0.84, raised to power 7 failures, and then 1 success. That's 0.16. You can evaluate this and see what you get from this. 0.84 raised to power 7 into 0.16, and that gives us 0.0472. 0.0472. That's the result. This is 3 significant figures. इसको अगर आप 0.047 पे छोड़ दोगे, which is 3 decimal places, you'll lose one mark because that's not 3 significant figures. Okay, एक mark कट जाएगा वहाँ पे. So you have to write at least 3 significant figures. This is what we get. Okay. Let's move on. Now it says for 4 randomly chosen years, find the probability that in exactly one of these years, the first wet day in October is 8th October. Okay, now that's a bit tricky because we've got one distribution inside another distribution. अब ये कौन सी distribution है? इसने कहा for 4 randomly chosen years. 4 years choose किए हैं. Find the probability in exactly one of those years, the first wet day is October. So outer डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन आपके यहाँ पे है आपके पास, दैट इज बाइनोमियल. वो कैसी बाइनोमियल है? उसमें हमारे क्या पैरामीटर्स हैं? 4 years चूज किए, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? n is 4. Now you have to find the probability of getting exactly 1 success. How are you defining success? Success is defined as the first wet day in October being 8th October. This is the criteria for success. जो मैंने highlight किया है, this is how they are defining success. ये आपका success है. First wet day in October is 8th October. ये तो हमने पिछले बार में find किया है. पिछले बार में क्या find किया है? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी? 0.0472. Probability of success is going to be 0.0472 here. P की वैल्यू यहाँ पे ये होगी. हमें क्या करना है? Exactly 1 success. So we're looking for x equals 1. Apply the binomial formula. NCR P raised to power R Q raised to power N minus R. N is 4. C1. P is 0.0472. Q is 1 minus this. वो क्या होएगा? 1 minus 0.04, 1 minus 0.0472. That is 0.9528, and that's going to give you something. 4 into 0.0472 into power 3 करना था इसको. 0.9528 power 3, and this gives me 0.163. That's the probability that we were looking for here. Okay. All right, let's move on. Now, question number 6 says the times taken in minutes to complete
a particular task by employees at a large company are normally distributed with mean 32.2 and standard deviation 9.6. Okay, this is the last question that we're doing from this paper, and then one question from the other paper. Then we end. The times taken in minutes to complete a particular task by employees at a large company are normally distributed with mean 32.2 and standard deviation 9.6. Find the probability that a randomly chosen employee takes more than 28.6 minutes to complete the task. Yeah, this is straightforward. आपके पास normal distribution है, ठीक है? और उसने क्या कहा? उसने आपको बताया हुआ mean 32. Can you still hear me? I think my AirPod got disconnected. Okay, now it's fine. Acha, so mu equals 32.2 and the standard deviation equals 9.6. आपको क्या करना है? आपको probability find करनी है x being greater than 28.6. ठीक है, x क्या है? Time taken को हम x कह रहे हैं यहाँ पे. ये probability find करनी है. It's pretty straightforward. ये आप कर सकते हैं. Simple normal distribution की application है. Second part में क्या कहता है? 20% of employees take longer than t minutes to complete the task. So you basically have x greater than t equals 0.2. This is inverse normal. ये probability आपके पास है. इसमें inverse normal apply कर देंगे. First part कर लें. चलें, let's actually complete this question. X greater than 28.6. ये उसने कहा है. Let me connect my charger just in a minute. Okay. All right, let's do the complete question. First part में इसने क्या कहा है? Probability of x greater than 28.6. आपको data given है, probability find करनी है. Z में convert कर लें पहले इसको. Z is greater than x, which is 28.6 minus mu 32.2 divided by sigma, that's 9.6. Z value देख लें क्या आ गई? 28.6 minus 32.2 divided by 9.6. That turns out to be probability of Z greater than minus 0.375. Now you can draw a small curve, try to understand ये क्या कौन सा एरिया आपको चाहिए. जीरो मिडिल में होता है. नेगेटिव वैल्यू आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ रही है minus 0.375. This is the value of z that you've got. You need the area towards the right side of it. ये एरिया चाहिए. अब ये तो आपको टेबल से नहीं मिलता, तो आप क्या करेंगे? इसको फ्लिप कर देंगे. So that becomes probability of z less than 0.375. हम कह रहे हैं राइट साइड पे जो ये नंबर होगा 0.375, हम उसके लेफ्ट साइड वाला एरिया देख लेते हैं इंस्टेड. दैट्स गोइंग टू बी द सेम यूजिंग सिमेट्री ऑफ द कर्व. ये अब जाके आप देख लेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से. वी आर बेसिकली लुकिंग फॉर phi of 0.375. इस पे जाके प्रोबेबिलिटी देखते हैं. ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे जाते हैं. That's right here. 0.375 was the value of z. What's the probability? 0.37. That gives us 0.6443. And then 5, that's here. कितना ऐड करना है? 199 पे ऐड कर देना है. That gives us 0.6462. That's the probability. जाके लिख देते हैं वहां पे 0.6462. That's what we were looking for. ठीक है, ये probability है. इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. For significant figures like that's okay. You don't have to round it off. Leave it as it is. 20% of employees take longer than 10 minutes to complete the task. This is inverse normal. आपको t की value find करनी है. So probability of x greater than t is given to be 0.2. How do you start with this? You say probability of z greater than something is equal to 0.2.
क्योंकि हमें टेबल में तो z दिया होता है, हम इसको z में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन यू फर्स्ट हैव टू फिगर आउट whether this value of z is positive or negative. That's the first thing to figure out. Is it positive or negative? You can think of the curve. Area towards right is 0.2. राइट साइड पे एरिया कितना है? 0.2. राइट साइड पे कम एरिया, तो z को आप कहाँ पे प्लेस करोगे तो राइट साइड पे कम एरिया होगा. अगर लेफ्ट पे प्लेस करते हो तो राइट साइड पे तो एरिया 0.5 से ज्यादा हो जाएगा. अगर राइट पे प्लेस करते हो तो फिर आपके पास एरिया 0.5 से कम होगा. तो बेसिकली z की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है. दिस वैल्यू इज पॉजिटिव. ओके, एंड वी आर गिवन दैट द शेडेड रीजन, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इस z की वैल्यू के राइट साइड के ऊपर, द शेडेड रीजन हैज एन एरिया ऑफ 0.2. तो इसके लेफ्ट वाला रीजन कितना हो जाएगा? क्योंकि ये तो फॉर्मूला शीट में नहीं दिया होता ना राइट वाला एरिया, फॉर्मूला शीट में तो दिया होता है लेफ्ट साइड वाला एरिया. तो इसके लेफ्ट वाला रीजन कितना हो जाएगा? राइट साइड पे अगर 0.2 है, एरिया टुवर्ड्स द लेफ्ट इज गोइंग टू बी 0.8. लेफ्ट साइड पे 0.8 एरिया होगा. So that's what we converted to. Sorry about that. That's what we converted to. We say probability of z less than this positive value of z, that should be 0.8. अब क्या करेंगे? ये probability की वैल्यू है, इस पे जाके हम टेबल से देख लेंगे z की वैल्यू क्या आती है. ठीक है, probability वैल्यू क्या है? 0.8. Let's do that. Probability value is 0.8. अब अंदर देखना टेबल के 0.8 किधर आ रहा है? 0.8 is going to be between these two values. Take the smaller value, 0.7995, 0.8 and 4. Z equals 0.84. अब इसमें कितना ऐड करना है to get 0.8? एंड पे हमें लास्ट डिजिट में 5 ऐड करना है. अब राइट साइड पे जाके देखें 5 किधर आ रहा है? 5 यहाँ पर आ रहा है. You get 2 from this, so this is 0.842. That's the value of z. Yes, that's good. So that's 0.842. यहाँ पे जाके लिख लेते हैं. z की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.842. अब यहाँ पे आपको देखना होता है z हमने हमारे पास पॉजिटिव है नेगेटिव है. पॉजिटिव था, so we just use this value of z. यही यूज कर लें. t फाइंड करना है ना आप, so use the formula. z equals x minus mu over sigma. z की वैल्यू 0.842 डाल दें. That equals x. x की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा था? t minus the mean. Mean was 32.2 divided by the standard deviation, which was 9.6, and that's going to give you the value of t. You have to evaluate कर लें. What does that turn out to be? 9.6 into 0.842 plus 32.2. That is 40.28. Or you can say 40.3. इसको आपने फ्रैक्शन में नहीं लिखना, ये उसने एग्जामिनर रिपोर्ट में अक्सर दिया होता है. टाइम आप निकाल रहे हो ना, टाइम को ये डोंट राइट एज फ्रैक्शंस. मतलब इसकी फ्रैक्शन मेरे पास जो आ रही है कैलकुलेटर पे, आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दिस 25,177 over 625. टाइम को ना हम एज अ फ्रैक्शन नहीं लगते होते, टाइम को हम डेसिमल्स में लगते हैं. So that's a general instruction that you should keep in mind. या तो decimals में लिखें या फिर mixed fraction लिखें. It's better to just write in decimal. इसी तरह छोड़ दें. ठीक है. अच्छा, let's move on. Part C. Find the probability that the time taken to complete the task by a randomly chosen employee differs from the mean by less than 15 minutes. इसका क्या मतलब हुआ? X जो है उसका मीन से डिस्टेंस 15 से कम होना चाहिए. What's the mean? Mean is 32.2. मीन आपका था 32.2. तो बेसिकली प्लस माइनस 15 हो सकता है उसके अंदर. So x should be between 32.2 minus 15 and 32.2 plus 15. So आपने क्या फाइंड करना है? आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है that x is between 17.2 and 47.2. ये आपको फाइंड करना है.
ठीक है. uh 15 को z पे कन्वर्ट कर लें. You could do that, but why? Yes, so yes, you could do that. That works. That works. अच्छा, so one way to think about this is, the symmetry of the curve. अब यहीं पे ना, क्योंकि आप देखें दोनों sides पे equal distance ले रहे हैं ना, दोनों sides पे equal distance ले रहे हैं. What you could do is you could draw a normal distribution curve like this and try to think of this. No, it's not the standard normal. It's just a normal distribution that represents this particular distribution. इस distribution में mean क्या है आपका? 32.2 is right in the middle. And what we're looking for is, we're looking for this region that's between 47.2 and 17.2. इनके दरमियान वाला रीजन हमें चाहिए. ये रीजन हमें चाहिए. ठीक है? This is the region that we're looking for. Now, how do we figure this region out? ये रीजन कैसे निकालें? ये रीजन हम कैसे निकाल सकते हैं? We can find the region towards the left of 47.2 and subtract from that the region towards the left of 17.2. तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट्स के अंदर. हम इसको कहेंगे it's the probability of x less than 47.2 minus the probability of x less than 17.2. ये आपने डिफरेंस फाइंड कर लेना. ठीक है? That's how you could do it. या फिर आप ये भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली इसको z में कन्वर्ट कर लो पहले. You could say this is probability of z between 17.2 minus 32.2 divided by standard deviation, which is 9.6, and 47.2 minus 32.2 divided by 9.6. And that's going to give you something. It's going to give you a probability that z is between 17.2 minus 32.2 divided by 9.6, which is 1.5625. Standard deviation 9.6 थी और ये 32.2 था. 17.2 minus 32.2 divided by 9.6. I'm getting minus 1.5625 here. जो दूसरी वैल्यू आपके पास आएगी राइट साइड पे, वो भी आपके पास यही होगी, 1.5625. And now what you're looking for is the region between these two. ठीक है? अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. आप ये भी कर सकते हैं कि आप साइड्स वाले रीजन फाइंड कर लें, 1 में से माइनस कर दें उसको. ये भी कर सकते हैं. आप इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लें. आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.5625, उसमें से माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन माइनस 1.5625. Maybe your calculation is wrong. 15 over 9.6 जो है, that is giving me 1.5625. Yeah, you can't do that. 17.2 में से माइनस करना है ना, 15 में से नहीं माइनस करना. 15 तो आपका रिजल्ट आएगा डिफरेंस करने के बाद. डिफरेंस करने के बाद जो रिजल्ट है, दैट इज 15. 15 minus 32.2 तो नहीं करेंगे ना. If you're finding the z value of 15, that would just be अच्छा, z value of 15. Okay, z value 15. उसको फिर आप क्या करोगे? 15 की वैल्यू निकाल के you could let me think about it. $15. Yes. Yes.
सर वालेकुम अस्सलाम। सर मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि अगर हम लोग cos 32.2 की z वैल्यू इज ऑब्वियसली 0, राइट? बिकॉज इट्स द मीन, यस राइट? तो अगर हम यस, लोग 15 की z वैल्यू निकाल लें तो दैट इज जस्ट ऑन ईदर साइड ऑफ 0, तो वो उसके बीच में जो एरिया होगा दैट वुड बी आवर प्रोबेबिलिटी, नहीं? लेकिन 15 एज अ नंबर उसकी जी वैल्यू नहीं निकाल सकते ना, मतलब 15 खुद अलग से तो नहीं है ना। 15 आपका या 32.2 में से माइनस होकर यहाँ पर आएगा 15, या उसमें प्लस होकर राइट साइड पे आएगा। आप 15 इंडिविजुअली तो कुछ नहीं है, 15 आपका डिफरेंस है, मीन्स है। हाँ, तो अगर दैट 15 इज द आपका डिफरेंस दैट आई विल यूज टू mark the z values on the left and on the right of 32 बट यू point कांट डू 0. दैट बिकॉज 15 आपका मीन से डिफरेंस है ना। अगर आपका यहाँ पे 15 होता है, लेट्स से व्हाट यू आर सेइंग इज कि 15 की एक अलग से कोई जी वैल्यू होगी जिसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। व्हाट इफ 15 जो डिफरेंस था दैट वाज बिटवीन 2.2 एंड 17.2, व्हाट इफ 15 यहाँ पे था, तो वहां पे तो आप इस तरह से 15 को जी में कन्वर्ट करोगे तो वो डिफरेंट वैल्यू आनी चाहिए वहां पे, लेकिन आपके मेथड से तो वो सेम ही आएगी वैल्यू। यू गेट व्हाट आई क्या मीन? मतलब सर? क्या मतलब? देखिए 15 अलग से तो कुछ रिप्रेजेंट नहीं करा ना। 15 तो आपका डिफरेंस है 32.2 से, असल वैल्यू तो आपकी 17.2 है और 47.2 है। तो 15 की जी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? मतलब 15 इज नॉट अ वैल्यू ऑफ एक्स, उसको तो हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते ना, वो तो सिर्फ डिफरेंस है बिटवीन दोस टू वैल्यूज। What you are saying would work अगर हमारी कर्व जो है वो कर्व ना होती, वो स्ट्रेट लाइन होती इस तरह से, फिर वो नीचे हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में प्रोबेबिलिटी लेते हैं वो इक्वल होती। यहाँ पे मसला ये कर्व है, तो आपकी प्रोबेबिलिटीज चेंज हो रही हैं एट एवरी इंस्टेंट। तो आप ठीक है सर। 15 को एज स्टैंड अलोन नहीं ट्रीट कर सकते। और वी कैन टेक इट ऑफलाइन इफ यू स्टिल डोंट गेट इट, लेट मी ट्राई ठीक है, अगेन। आफ्टर द क्लास। ओके ओके ऑलराइट। अच्छा, uh, ये आपके पास दो प्रोबेबिलिटीज आ गई, इनको इनको हमने माइनस करना है। ये तो स्टैंडर्ड है, इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। दिस इज जस्ट फाई ऑफ 1.5625 माइनस करना है आपने ये वाला रीजन विच इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ दिस, ये वाला रीजन माइनस करना है। अब ये रीजन हम डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, तो उसके बारे में सोच लेते हैं हम थोड़ा सा। इट्स दिस रीजन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इसको पहले फ्लिप करेंगे। फ्लिप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। So we'll say that's the same thing as saying probability of z greater than 1.5625. अब ये भी नहीं कर सकते डायरेक्टली, इसका हम लिख देंगे 1 minus probability of z less than 1.5625. So this basically becomes 1 minus probability of z less than 1.5625. So basically हमें एक ही पॉइंट पे z वैल्यू देखनी है, so that's also phi 1 minus phi of 1.5625. ये दोनों वैल्यूज निकाल लें टेबल से, एक ही वैल्यू इनफैक्ट 1.5625। इसको इनफैक्ट आप राउंड ऑफ कर लें, मेरे पास क्या आ रहा था 5625 एग्जैक्ट आ रहा था। Let me see if that's actually exact. Yeah, that's actually exact 5625। तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमें z देखना है, z 3 डेसिमल प्लेसेस पे चाहिए होता है, तो इसको मैं राउंड ऑफ करके लग देता हूँ 3। ठीक है, राउंडिंग इट अप, एंड पे 5 आ रहा हो तो हम वैसे तो किसी भी साइड पे कर सकते हैं, but it's better to round up. This is the value of z that I have. Why am I writing 3 decimal places? Because टेबल के अंदर 3 decimal places होते हैं। अब 1.563 पे जाके उसकी वैल्यू देखें टेबल से। 1.563, what's the probability that we get? 1.56, that's this value, and then 3 add करना है थर्ड डेसिमल प्लेस, और यहाँ पे 4 ऐड हो जाएगा 0.9406,
एंड पे 4 ऐड किया 0.9410. That's the probability that we get there. Let's input 0.9410 minus 1 minus 0.9410. And now you can evaluate this and see what you get. ठीक है, ये देख लेते हैं क्या आता है. .9410 minus 1 plus 9410. This is 0.882. So the result turns out to be 0.882. That's our final probability. That's what we were looking for. Okay. All right. So that completes our paper. The questions that we had to do from this paper. Last question be it's pretty straightforward. O levels wale concepts. So that's it for this paper. Let's move on to the next one. That's paper 5.3. Most of this paper is pretty straightforward. We are just going to look at one question, and that's on permutation and combination. First, second, third, fourth. Yeah, all of the others are relatively straightforward. Let's look at this question number 5. This is the only question that's a bit tricky in this paper. Let's look at this. Again, this is permutations and combinations. So what do we have here? A security code consists of 2 letters followed by a 4-digit number. The letters are chosen from A, B, C, D, E, and E, and the digits are chosen from 1 to 7 numbers. No letter or digit may appear more than once. An example of a code is this. How many different codes can be formed? Now, how many letters do we need at the start? We need 2 letters. And then we need how many numbers? 4 numbers. We need 4 numbers after that. Yeah, this is what we need. Ab letters aapke paas kitne total available hain? You've got 5 letters total. So you have to select 2 out of 5 letters, but फिर उनको arrange भी करना है. Right? उनका arrangement भी possible है. So we can do 5p2 directly. या ये कर सकते हैं आप कर सकते हैं 5 choose 2. पहले choose कर लें, बाद में 2 factorial से multiply कर दें. That's the same thing. 5p2 ये आ गया. Multiply by 7p4. 7 में से आपने 4 numbers choose करने हैं, उनको arrange करना है. That's what we get. And that's going to give you some result. या आप देख लें क्या आता है. 5p2 into 7p4. That's relatively straightforward, the first part. This turns out to be 16,800. Okay, let's move on to the next one. Now, the next part says, find the number of different codes that include the letter A or the digit 5 or both. Okay. So we need either letter A or digit 5 or both. 3 cases आपके पास बन गए. क्या cases बने? A हो और 5 हो, दोनों हो. एक केस आपके पास हो गया A हो 5 नहीं हो, so A and 5 dash. एक और केस क्या हो गया? A नहीं हो और 5 हो. ये 3 cases आपको चाहिए. What's the 4th possible case? The 4th possible case is that you don't have any of them. ये case नहीं चाहिए. Right? These are the cases that we have. So we can either find these 3 cases separately, or we can find this case and subtract that from the total जो हमने first part में find किया था 16,800. उसमें से ये वाला केस माइनस कर दें जब आपने A भी नहीं इंक्लूड किया और 5 भी इंक्लूड किया, वो वाला केस माइनस कर दें. ठीक है, so that's what I'm going to do. That's quicker. So we want no A and no 5. A भी नहीं चाहिए और 5 भी नहीं चाहिए. Now, how do we figure out this case? Total letters कितने थे? 4, 5. अगर A आपने नहीं include करना, what do you get here now? 4 में से आपको 2 letters choose करने हैं और उनको arrange करना है. That's 4p2. Okay. And then
You do not need 5 as well. How many letters did we have in total? How many numbers did we have in total? We had 7 numbers in total. हमने कहा कि हमें 5 नहीं चाहिए. कितने numbers रह गए? We are left with 6 numbers. Out of those 6 numbers, we have to arrange 4. So that's going to be 6p4. And that will give you something. 4p2 into 6p4. And that is 4320. This is the case when both of them are not included. हमें इसका opposite चाहिए था. हम क्या कहेंगे? The required number of arrangements, what are they now? Required number of arrangements, there are 16,800 minus 4,320, and that will give you the final result. That's 16,800 minus 4320. That turns out to be 12,480, and that's your final result. Okay, so this is quicker. Another possibility could have been आप ये तीनों cases अलग-अलग find कर लो, उनको add कर दो. That will take a few more steps, but that's also doable. Okay, okay. Let's move on to the next one. Now it says a security code is formed at random. Find the probability that code is DE followed by a number between 4,500 and 5,000. अच्छा, ये जो probability वाले questions होते हैं ना, इस तरह की arrangements के अंदर, they are quite tricky. Especially when you've got some letters or numbers जिनमें से आपने choose करने हैं, अगर उनमें कोई repetitions आ रही हो ना, ये probability वाला part थोड़ा सा tricky हो जाता है. So we'll do those examples in some of the later papers that we do. I think June में या March में आए हुए हैं कुछ तरह के questions. They're very tricky. You have to make sure that you understand those situations well, जहाँ पे इनके अंदर कोई चीज repeat हो रही होती है, उसमें से आपने choose करना होता है. But this is relatively easier. Why? Because there are no repetitions. There are no repetitions. सारे letters different हैं, सारे numbers different हैं, और आप multiple नहीं choose कर सकते. ठीक है? So this is relatively straightforward. आपको probability find करनी है that the code is DE. Okay. So letters तो fix हो गए. Letters में तो कोई choice रही नहीं आपके पास. Letters आपने fix कर दिए. A, B, C, D, E में से you need exactly these. So that's fixed. Now you want a number that's between 4,500 and 5,000. अगर 4,500 और 5,000 के दरमियान में number है, 4,500 और 5,000 के दरमियान में number है, तो total numbers कौन से हैं आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Well, it doesn't matter. 4,500, 5,000 वो include करें या ना करें, it doesn't matter. Zero तो है ही नहीं, exactly, right? So it doesn't matter. अच्छा. Now, what do we want in these 4 places for numbers? A first place में तो 4 ही आ सकते हैं. There's no choice there as well. If the number has to be between 4,500 and 5,000, the first number here has to be a 4. What about the second number? Second number अब क्या क्या हो सकता है? Second number could be 5. या तो 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या 7 आ सकता है. There are 3 possibilities that we've got for this place. 3 possibilities for this place. ठीक है? And then how many possibilities for the remaining? आपने एक number इधर place कर दिया, एक number यहाँ पे place कर दिया, 2 place हो गए. How many are you left with? You're left with 5 numbers, and that's going to be 5 for this. इसके लिए 5 options बच गई, इसके लिए 4 options बच गई. Multiply them. 3 into 5 into 4. Yes, or you could also do that. 5p2. You could say 3 into 5p2. 5 into 4 is the same thing as 5p2. एक ही बात है. It's easier to just think of it this way. If second box के लिए आपके पास 3 options थी, then how many numbers are you left with? 5 numbers. So you've got 5 options for this one, and then 4 for the next one. So that's going to be 3 times 5 times 4, and that gives us 60. This is the number of cases that you have. This is the number of ways, or the number of different arrangements, a number of different codes that you have that satisfy this condition. What's the probability now? Probability के लिए आप क्या करोगे?
इस नंबर को डिवाइड कर दोगे जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस थे उसके साथ. That's 60 divided by the total number of cases. What was the total number of cases? It was 16,800 from the first part. You divide it by that and you see what that gives you. Hassan, this is November 21, paper 5, variant 3. Paper 5-3. That's what it is. Okay. So we have 60 over 16,800. And this gives us 1 over 280. That's the result. All right. So that's your final answer here. And that's it. So the rest of the questions on this paper are relatively straightforward. इसमें कोई खास complication नहीं है. इसका assume threshold भी इतना low नहीं होगा. Just have a look, just in case. So, I don't have that written here, but I think amongst 3 variants, this was the easiest one, 5-3, and we're done with that. Yeah, ऐसा question आ जाए permutation का तो क्या ही बात है. It's pretty straightforward, right? So that's it for today. We'll end this here. It's been long 2 sessions.